हेलो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अ शिप इज फिटेड विथ 3 इंजन्स E1, E2 एंड E3. द इंजन फंक्शन इंडिपेंडेंटली. इंजन क्या है? इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहा है ऑफ ईच अदर रिस्पेक्टिवली विथ प्रोबेबिलिटी 1/2. E1 का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है. E2 का 1/4 है और E3 का क्या है? 1/4 है. फॉर शिप्स टू बी ऑपरेशनल एटलीस्ट 2 ऑफ कम से कम इसका क्या होगा? 3 में से 2 इंजन मस्ट फंक्शन. ठीक है. लेट बोल रहा है लेट x डिनोट द इवेंट दैट द शिप इज ऑपरेशनल. लेट कह रहा है x डिनोट कर रहा है कि शिप ऑपरेशनल है एंड लेट x1 x2 x3 क्या है? डिनोट कर रहा है इवेंट दैट द इंजन E1 E2 एंड E3 आर फंक्शनल. x1 डिनोट कर रहा है कि E1 इंजन फंक्शनल है, x2 डिनोट कर रहा है कि E2 इंजन फंक्शनल है और x3 क्या डिनोट कर रहा है कि E3 फंक्शन कर रहा है. तो बताना कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है. सबसे पहले ये देखते हैं कि E1 इंजन क्या है. ठीक है, के लिए देखते हैं x1 क्या डिनोट कर रहा है कि इंजन E1 क्या है? फंक्शनिंग. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 क्या हो जाएगा? क्या गिवन है? 1/2. तो प्रोबेबिलिटी की x1 फंक्शन नहीं कर रहा है क्या हो जाएगा? 1 - 1/2 क्या कितने के हो जाएगा? 1/2 के. सिमिलरली x2 क्या है कि E2 फंक्शनिंग. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 क्या है? गिवन है 1/4. तो प्रोबेबिलिटी की x2 का फंक्शन नहीं करेगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 - 1/4 कितना के इक्वल हो जाएगा? 3/4 के. सिमिलरली अगर देखें क्या चीज के लिए? x3 के लिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 क्या हो जाएगा? क्या गिवन है? 1/4. तो प्रोबेबिलिटी की x3 काम इंजन नहीं काम कर रहा है क्या हो जाएगा? 3/4. अब देखते हैं कि हमें क्या करना है. अब हम x निकालते हैं. x क्या डिनोट कर रहा है कि इवेंट की शिप इज ऑपरेशनल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या हो जाएगा कि x ऑपरेशनल है. x ऑपरेशनल कब हो सकता है? या तो फिर तीनों इंजन चल रहा हो या फिर तीनों में से कोई एटलीस्ट 2 चल रहा हो. ठीक है, क्योंकि ऑपरेशनल कब होगा? एटलीस्ट 2 ऑफ इट्स इंजन मस्ट फंक्शन. तो क्या क्या हो सकता है कि तीनों इंजन चल रहा हो, यानी कि E1 E2 एंड E3. ठीक है ना, वर्किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ आउट ऑफ 2 E1 E2 E3 में आउट ऑफ एटलीस्ट आउट ऑफ 3 में से. एक मिनट, इसे फिर से सही से लिख देते हैं. एटलीस्ट 2 आर वर्किंग आउट ऑफ E1 E2 एंड E3. यही होगा. ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्या क्या प्रूफ. ये क्या हो जाएगा? इसका कि तीनों काम कर रहा हो तो इसका क्या हो जाएगा? E1 x1 भी काम कर रहा हो एंड है. एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन. x2 भी काम कर रहा हो और तीनों काम कर रहा हो. ठीक है, प्लस एटलीस्ट 2 काम कर रहा हो. तो एटलीस्ट 2 काम करने का क्या होगा कि पहला काम कर रहा है एंड दूसरा काम कर रहा है लेकिन तीसरा काम नहीं कर रहा है. तो तीसरा का क्या हो जाएगा? 12 प्लस प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे तीसरा काम नहीं कर रहा था, अब पहला काम कर रहा है यूनियन, लेकिन दूसरा काम नहीं कर रहा है यूनियन, तीसरा काम कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये एक तरह से यूनियन x3. ठीक है, और प्लस प्रोबेबिलिटी की पहला काम नहीं कर रहा है यूनियन x2, दूसरा काम कर रहा है यूनियन तीसरा. तो इन तीनों में अब क्या है कि एटलीस्ट 2 काम कर रहा है. यहाँ पे x1 x2 काम कर रहा है, यहाँ x1 x3 काम कर रहा है और यहाँ x2 x3 काम कर रहा है. देखते हैं अब यहाँ पे क्या गिवन है कि ये जो सारा इवेंट है ये क्या है? इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है. ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं? इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा तब फॉर्मूला? px1 इंटू px2. ठीक है, ये हो जाएगा px3. इसका क्या हो जाएगा? px1 इंटू ये px2 इंटू क्या ये px3 का डैश. ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट वाला. ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा px1 प्रोबेबिलिटी
ठीक है, ये x2 का और प्रोबेबिलिटी क्या है x3 का, और ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट x2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3। वैल्यू पुट करते हैं सबका, क्या क्या मिला हमें 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 प्लस यहाँ पे x3 काम नहीं कर रहा है तो इसका काम करने का कितना है 1/2 इंटू 1/4, इसका काम करने का क्या है 3/4। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं सब काम निकाला हुआ है, प्लस ये क्या हो जाएगा x1 काम कर रहा है यानी कि 1/2, x2 काम नहीं कर रहा है 3/4, x3 काम कर रहा है 1/4 प्लस x1 काम नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा 1/2, x2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 है 1/4 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा ये 1/48 सॉरी 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 प्लस ये क्या हो जाएगा 3/32 प्लस 3/32 प्लस 1/32, ये कितना की इक्वल हो जाएगा 8/32 के इक्वल हो गया किसके 1/4। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या मिला 1/4। ठीक है, अब हम पहला ऑप्शन देखें क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कॉम्प्लीमेंट, पहला ऑप्शन दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कॉम्प्लीमेंट गिवन डेट कि क्या हो रहा है कि ये इवेंट ये क्या हो x यानी कि सीप क्या है ऑपरेशनल है, तो x1 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं px1 ये कॉम्प्लीमेंट है इंटरसेक्शन x बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ठीक है, अब हम देखें x1 और x का जो हम अगर निकालेंगे क्या इंटरसेक्शन मतलब x और x1 दोनों होना चाहिए, तो क्या होगा देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। क्या होना चाहिए हमें x1 का x1 डैश देखना है, तो x1 डैश किस में है इसमें ये वाला, तो ये वाला क्या होगा हम इसका और इंटरसेक्शन होगा किसका इसके साथ, तो ये क्या क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी की x1 का इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3 ये होगा दोनों का कॉमन चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो इसका क्या वैल्यू होगा यहाँ से ये सेम होगा ये वाला यानी कि 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 बाई px का क्या निकला है 1/4, ये हो जाएगा 1/32 इंटू 4 किसके इक्वल हो गया 1/8 के। ऑप्शन क्या गिवन है 3/16 यानी कि ये क्या है गलत है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है कि एग्जैक्टली 2 इंजन फंक्शन कर रहा है, तो एग्जैक्टली 2 इंजन कौन सा है कि एटलीस्ट यहाँ पे एटलीस्ट 2 नहीं है ये एग्जैक्टली है, एटलीस्ट ये एग्जैक्टली है। ठीक है, एग्जैक्टली 2 आर वर्किंग आउट ऑफ, तो एग्जैक्टली में एग्जैक्टली क्या हो जाएगा ये तीनों ऑप्शन, ये तीनों हम क्या करेंगे ऐड करेंगे ये तीनों को, तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्टली 2 इंजन्स आर वर्किंग क्या होगा इस तीनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा 3/32, ये क्या होगा 3/32 और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/32 कितने की इक्वल हो जाएगा 7/32। तो हम यहाँ से देखें तो हमें निकालना है कि एग्जैक्टली 2 आर वर्किंग गिवन, यहाँ पे गिवन है कि x यानी कि x क्या है कि शिप्स आर फंक्शनिंग, तो प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्टली 2 इंजन्स आर वर्किंग क्या है गिवन x, तो क्या हो जाएगा 7/32, x का क्या रहता है 1/4, तो क्या हो जाएगा 7/32 इंटू 4/1, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा आंसर 7/8 ये होगा आंसर। तो ये ऑप्शन क्या है 7/8 सही है। अब ये देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है, थर्ड ऑप्शन है px गिवन क्या है x1 आर ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन x1 बाई x। ठीक है, तो x1 और x का इंटरसेक्शन क्या क्या होगा एक यहाँ पे होगा, ठीक है ये x है ना, तो एक ये वाला चीज होगा इंटरसेक्शन में
और क्या होगा, ये होगा, और x1 हो रहा है, और कौन सा है, एक ये है x1, और ये क्या है, और ये है x1, ठीक है। तो निकालते हैं, तो क्या क्या होगा, 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/4, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू ये काम कर रहा हो x1, तो एक बार x2 नहीं काम करेगा, एक बार x3 नहीं काम करेगा, ठीक है। 1/2 इंटू 1/3/4 इंटू 1/4, ये क्या निकाल रहे हैं हम, x इंटरसेक्शन x1 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 32 प्लस 3/32 प्लस 3/32 कितना के इक्वल है, 7/32 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन दैट x1 क्या हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ पे x1 है, सेवन बाई 32 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, 1/2, 1/2, 7/32 इंटू 2, 16, तो क्या हो जाएगा, 7/16 मेरा आंसर। तो 6/16 क्या है, 5/16, यानी कि क्या है, गलत है। अब हम देखते हैं 4 में क्या है, 5x1 क्या होगा, 6/17, और आंसर क्या है मेरा, 7/17, तो ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। थैंक यू। Hello students, today's question is let H1, H2 and Hn up to Hn be the mutually exclusive event with P of Hi is greater than 0, where I equal to 1, 2, 3 up to n. Let E be any other event with 0 less than P, 0 less than P of E less than 1. The probability of E is less than 1 and greater than 0. In the statement they are given, the statement of P of H of I by E, which is greater than P of E by H of I into P of Hi. For I equal to 1 to 3 up to n. The statement 2 they are given summation of I equal to 1 to n, P of H of I equal to 1. Okay, so let's move to the answer. Now here I'm going to write down the given condition H1, H2, H3 up to n, right? So here it is mutually exclusive event. Okay, so H1 union H2 union H3 union up to union H of n, which is equal to sample space S. I'm going to take this sample space S. So here this is the sample space. That means it is the each event. Okay, so the probability of all the event which is equal to total sample space value. The total sample space value in probability equal to 1. So the probability of each event equal to I going to taken here. So probability of H1 plus probability of H2 plus probability of H3 up to probability of Hn, which is equal to 1. So this is the sample space value, total value equal to 1. Now I'm going to take this statement 1 here. So statement 1 I'm going to take on here. So the P of Hi by E. Focus on the statement I'm going to take on here. So statement 1. It is in the form of conditional probability. So P of Hi divided by E. So the conditional probability formula is P of Hi intersection E divided by P of E. Okay, so this is the conditional probability formula. Here I'm going to multiply this with divide by P of Hi divided by P of Hi here. Okay, students. So here Hi is greater than 0 and I equal to 1 to 3, right? It is mutually exclusive. Okay, so it is mutually exclusive. So I'm going to turn this one as P of Hi intersection E, which is divided by P of Hi. I'm going to turn that P of Hi into, I'm going to exchange this value here. So P of Hi divided by P of E. Okay, so it's P of E. Here it is the mutual exclusive and it is the sample space. It is the sample space where Hi is greater than 0. Hi is greater than 0. That means the Hi value is equal to greater than 1.
Okay, so therefore, if it is greater than 1, it is greater than 1, P of E is very small value, right? P of E is very small value. So I'm going to take here, so HI intersection E, which is equal to pi. I'm going to take it. So, which is equal to pi. Therefore, this P of HI value, P of HI by E, so P of E equal to 0. So P of E equal to 0, therefore 0 equal to this value is also, if it is 0, so all values are 0, so 0. Okay, so all values are 0. Where next, here they given P of E is greater than 1, less than 0, right? I'm going to take it here. So P of E is less than 1 and greater than 0 by this condition, if P of Y is not equal to 0. Okay, so if HI of intersection E, which is not equal to pi value, if is equal to pi, then whole term is 0. If not equal to pi, this value I will return as P of HI by E, and which is equal to this P of E divided by HI. Okay, so it's P of E by HI. So I'm going to also clearly P of E by HI into P of HI here. So this one here, P of E divided by HI equal to P of HI divided by whole E. P of whole E. It will become P of E. Okay, students. Here P of E value is less small value. Probability of E value equal to small value. So if it is small value, then this value is bigger, right? So this value is bigger. So this value is bigger. Therefore, probability of H of I by P, which is greater than equal to probability of E by HI into probability of HI. Okay, students. So this is the condition here. So if we see here, probability of E of HI into probability of HI. Okay, student. So statement 1 is here the statement 1 is correct, but here HI intersection E of pi value is equal, the value is equal, right? So if it is at the pi value, it is equal. Okay, so therefore here this condition is false because the value is not equal here. Okay, so the condition is statement 1 is false, and the P of HI value equal to 1, it is true. The P of HI value equal to 1, it is true. Okay, so statement 1 is false and statement 2 is true. Okay, students, thank you. In this question, let even is the event when box 1 is chosen, box 1 is selected, and E2 is the event when box 2 is selected. So probability of occurring event even will be 1 by 2, and probability of occurring event 2 E2 is 1 by 2. There will be equal probability to select one box from two boxes. So consider R is the event when red ball was drawn. Then P R by E1 is the probability to select red ball from box 1, and similarly P R by E2 is the probability to select
red ball from box 2. Since PR by E1 is the probability to select a red ball when E1 has already occurred. So E1 has already occurred means box 1 is selected. So this is the probability to select red ball from box 1. So I can write then probability that the red ball probability E2 by R is the probability that the red ball was selected from box 2, or I can say this is the probability that the box was second box when the ball drawn is red one. So this is given by P E2 into P R by E2 divided by P E1 into P R by E1 plus P E2 into P R by E2, and in the question it is given 1 by 3. So this is equal to 1 by 3. Now in box 1 we have n1 number of red balls and n2 number of black balls. So probability to select red ball from box 1 will be total number of red balls is n. So n1 by n1 plus n2, and the probability to select red ball from box 2 will be, since there are total n3 plus n4 number of balls and in which n3 are red balls, so I can write n3 by n3 plus n4. So this is equal to 1 by 2 n2 n3 by n3 plus n4 divided by 1 by 2 into n3 n1 by n1 plus n2 plus 1 by 2 into n3 by n3 plus n4 is equal to 1 by 3, or I can say n3 by n3 plus n4 divided by n1 by n1 plus n2 plus n3 by n3 plus n4 is equal to 1 by 3. So option A and option B satisfy this expression, so I can say that option A and option B are correct options. So in this question two events are happening. The first event is that a ball is drawn at random from box 1 and transferred to box 2. This is first event. And the second event, when we are drawing a ball we are drawing a ball from box 1. So there can be two possibilities, that the first ball drawn can be red or black, and so our probability will be probability to select red ball after the first event, after first ball drawn and transferred. So red ball after transferring, this is the probability to choose, this is the probability to select red ball while the first ball is transferred. So this is
this will be first red ball transfer and multiply with selecting red ball from box 1 plus the second possibility that the transfer ball is black, so black ball transferred into selecting red ball after transfer. So if we are transferring one ball from box 1 to box 2, then probability to select red ball in first event will be n1 by n1 plus n2. Now the remaining balls in box 1 will be n1 plus n2, the total balls, minus 1 ball, and red balls will be, since one red ball is transferred to box 2, so the remaining red balls will be n1 minus 1. So this probability will be n1 minus 1 divided by n1 plus n2 minus 1, plus the second case when the transfer ball is black ball, then probability to transfer one black ball from box 1 to box 2 will be n2 by n1 plus n2, and since one ball is transferred to box 2, so the remaining balls will be n1 plus n2 minus 1, and red balls will be n1, and black ball will be n2 minus 1, since one black ball was transferred to box 2. So this is n1 by n1 plus n2 minus 1, and it is given in the question 1 by 3, so it is equal to 1 by 3. So from here I can write n1 by n1 plus n2 and n1 minus 1 plus n2 divided by n1 plus n2 divided by n1 plus n2 minus 1 is equal to 1 by 3, or I can say n1 by n1 plus n2 is equal to 1 by 3. So option, now we can check option C is right and D is right. So option C and option D satisfy this condition, so our answer will be C and D. So guys, let's start with this question. Let n1 and n2 be the number of red and black balls respectively in box 1. Let n3 and n4 be the number of red and black balls respectively in box 2. A ball is drawn at random from box 1 and transferred to box 2, right? So the probability of drawing a red ball from box 1 after transferring is 1 by 3. Then the correct option is with this possible value of n1 and n2 are. Okay, we just have to find the possible value of n1 and n2, right? So let's start with the question. Let's start with the given things, right? Given, which is n1 divided by n1 plus n2, right? Which is into n1 minus 1 divided by n1 plus n2, right? Plus n2 divided by n1 plus n2 into n1 divided by n1 plus n2, right?
which is equal to 1 by 3, which is given right here, right? So it further implies that 3n1 square minus n1 plus n1 and 2 equal to n1 plus n2 into n1 plus n2 minus 1, right? So it further implies that 3n1 n1 plus n2 minus 1 is equal to n1 plus n2 into n1 n2 minus 1. So it's imply 2n1 equal to n2. So this is the relation between n1 and n2. So if you put any value, like if you put n equal to 3, so n2 equal to 6. So just it is the relationship between the n1 and n2. Thank you.